Assalamu alaikum dear students. Poem number 19, Hawk's Monologue by Ted Hughes. Hawk's Monologue means औकाब की खुद कलामी या औकाब की हम कलामी. Students, as I told you before कि मोनोलॉग का मीनिंग क्या होता है. मोनोलॉग मीन्स एक पर्सन का अपने साथ गुफ्तगू करना या अपने साथ हम कलाम होना. This poem is also a symbolic poem in which poet has used hawk as a symbol of a dictator. इस पोइम में पोइट ने उकाब को एक ऐसे हुक्मरान की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है जो कि अपनी ताकत और मर्तबे पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करता है और उसे हर नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करता है और दूसरों को तकलीफ़ देकर वो नहायत ही फ़ख्र महसूस करता है अपनी ताकत से. और वो इस हकीकत को भूल चुका है कि यहाँ पे इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी फ़ानी हैं और तब्दील शुदा हैं और अगर कभी उसे अपनी गलती का एहसास हो भी जाए तो तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है. सो लेट्स बिगिन द पोएम. I sit in the top of the wood, my eyes closed. In action no falsifying dream, between my hooked head and hooked feet, or in sleep rehearse perfect kills and eat. यहाँ पे एक उकाब जो है वो अपने साथ मुखातिब होकर कह रहा है कि मैं दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठा हूँ और मेरी आंखें बंद हैं. इन एक्शन नो फॉल्सीफाइंग ड्रीम, और मैं बहुत ही सुस्त और आराम की हालत में बैठा हूँ और मैं कोई गुमराह कुन ख्वाब नहीं देखता, यानी कि ऐसा ख्वाब कभी नहीं मैंने देखा जो मुझे गुमराह कर दे. बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट, और मेरे मुड़े हुए सर और मुड़े हुए पाँव के दरमियान मैं बिल्कुल सुस्त होकर बैठा हूँ. और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड ईट, और मैं सोते हुए भी अपने शिकार को पकड़ने और उसको मारने की मशक कर रहा हूँ, रिहर्स कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ. In these lines, the poet tells us about a monologue of a hawk who says that he is sitting on the top of the tree in sleeping position, but with his closed eyes, he is rehearsing to catch his prey. The poet has used the hawk as a symbol of dictator. He is not seeing false dreams. He believes in action, which is always quick and sudden. Second stanza. The convenience of a high trees, the air's buoyancy and the sun rays. The convenience of the high trees, मुझे ऊंचे दरख्तों की सहूलत मुयस्सर है या सहूलत हासिल है. The air's buoyancy and the sun's ray, और हवा में तैरने की सलाहियत और सूरज की जो रोशनी है या सूरज की जो तपश है वो उसकी सलाहियत. आर एन एडवांटेज टू मी, ये मेरे लिए फ़ायदे के लिए हैं या ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे फ़ायदे के लिए हैं. एंड द अर्थ्स फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन, और ज़मीन का जो चेहरा है वो मेरी तरफ अपना रुख किए हुए है. किस वजह से? मेरा मुशाहिदा करने के लिए या फिर मेरा मुआयना करने के लिए. अब यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा प्राउडी फील कर रहा है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो नेचुरल थिंग्स हैं जैसे सूरज की रोशनी और हवाओं में तैरना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे फ़ायदे के लिए हैं. In these lines, the poet says that Hawk is expert in hunting. Hawk says that his position is superior, is for him. The air gives him help and he flies upwards. The sunlight also makes everything clear for him. He thinks that the upward face of earth is for his inspection. कि ज़मीन का जो ऊपर रुख है, ज़मीन का जो चेहरा है वो उसकी इंस्पेक्शन के लिए है, उसके मुआयने के लिए है. नेक्स्ट स्टेंजा है. माई फीट आर लॉग्ड अपॉन द रफ बाग, और मेरा जो पंजा है, मेरे जो पाँव हैं वो दरख्त की खुरदरी छाल पर मजबूती से जमे हुए हैं. या मैंने अपना जो पाँव है, अपना पंजा जो है वो दरख्त की शाख पर जमाया हुआ है. इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन, और जितना वक्त पूरी कायनात को तख्लीक करने में सर्फ हुआ या लगा, टू प्रोड्यूस माई फुट, उतना ही वक्त मेरा एक पाँव तख्लीक करने में लगा. माई ईच फीदर, और मेरा हर पर
تخلیق کرنے میں اتنا ہی وقت لگا. Now I hold creation in my foot. اور اب پوری کائنات میرے پاؤں کے نیچے ہے. یعنی کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو یہاں پہ سپیریئر فیل کر رہا ہے کہ میں سب سے اوپر ہوں اور ساری جو کائنات ہے وہ میرے پاؤں کے اندر ہے, میرے پنجے میں ہے. In these lines the hawk says that his feet are fixed on the tree branch. He says that he is the best creation of God. He says to himself that my feet and feathers are perfect from every point of view. وہ کہتا ہے کہ میرے جو فیدر ہیں اور میرے جو پاؤں ہیں اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے, کوئی بھی مسٹیک نہیں ہے, وہ بالکل پرفیکٹ ہیں. Nature has used all its techniques to create them. He says that God has given him extraordinary powers so he can hold any creature in his feet easily. کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی پاور دی ہے کہ وہ کسی بھی کریچر کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا سکتا ہے. اور fly up and revolve it all slowly. اور جب میں اڑتا ہوں تو پوری کائنات دھیمے دھیمے یا آہستہ آہستہ گھومتی ہے. I kill where I please because it is all mine. میں جہاں چاہوں خوشی سے کسی بھی شکار کو مار ڈالتا ہوں یا کل کر دیتا ہوں. Because it is all mine, کیونکہ یہ ساری چیزیں میری ہی ہیں, یہ ساری کائنات میری ہی ہے. There is no sophistry in my body. My manners are tearing off heads. میرے جسم کی تخلیق میں کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی اور میرا یہ مینر ہے, میرا یہ طریقہ ہے کہ میں اپنے شکار کو اس کے سر سے ہی چیر پھاڑ دیتا ہوں. In these lines, Hawk presents himself a very powerful creature. He flies wherever and whenever he likes. He kills other birds and living beings for his pleasure because he thinks that he is the king of his own world. There is no defect in his body. It is his habit to kill others and nothing can stop him from this habit. وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں پیدا نہیں ہوئی جو مجھے ایسا کرنے سے روکے. The allotment of death for the one path of my flight is direct through the bones of the living. No arguments assert my right. The allotment of death, میں جسے چاہوں اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں. For the one path of my flight is direct through the bones of the living. اور میری پرواز کا جو راستہ ہے وہ سیدھا میرے شکار کی ہڈیوں میں سے گزرتا ہے. No arguments assert my right. اور مجھے اپنا حق ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی آرگومنٹس پیش کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. جی, Hawk says that he is like a death angel. If anyone disturbs his flight, he kills him. He has the right to kill others and there is no need of any arguments to prove this right. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں جسے چاہوں جہاں چاہوں اسے مار سکتا ہوں, کل کر سکتا ہوں اور مجھے اس کی وجہ ثابت کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یا مجھے یہ اپنا جو حق ہے اس کو چھیننے سے کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا. The sun is behind me. سورج میرے پیچھے ہے, یعنی کہ سورج میرے تابع ہے, سورج میری پیروی کرتا ہے. Nothing has changed since I began. جب سے میں نے اس دنیا میں یا اس کائنات پر حکمرانی شروع کی ہے کوئی بھی چیز نہیں بدلی. My eye has permitted no change. دراصل جو میری آنکھ ہے اس نے کسی بھی تبدیلی کی اجازت نہیں دی. I am going to keep things like this. اور میں آئندہ بھی چیزوں کو ایسے ہی رکھوں گا یا پھر ایسے ہی رکھنے کی کوشش کروں گا اور کوئی بھی چینجنگ نہیں آنے دوں گا. In these lines, Hawk tells his final view about his authority. He says that sun is behind him. Nothing has changed since he has begun his practical life. He would not allow anything to change. He would like to keep things in the same way. He do not want any disturbance in his kingdom. وہ اپنی کنگڈم میں کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں چاہتا, کوئی بھی انٹرپشن کسی کی نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے کہ جیسا میں چاہوں میں ویسا ہی رکھوں گا اسے,
اپنی کنگڈم کو، اپنی دنیا کو. So learn this poem with explanation and translation.